अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पैरेलल फॉर्म को डिराइव करते हैं। इससे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म डिराइव कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है डी स्क्वेयर्ड यू और डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ आवर h squared u squared. Now if p is the perpendicular distance from the origin to the tangent to the point of orbit, then we know that 1 over p square is equal to 1 over r square plus 1 over r power 4 and this dr by d theta squared. Now since हम इससे पहले देख चुके हैं, हम r is equal to 1 over u जब पुट करते हैं तो we can write this as, अब हमें dr by d theta की वैल्यू चाहिए, so we can take this dr by d theta is equal to d by d theta 1 of u. So this dr by d theta can be written as minus 1 over u square du by d theta. Okay. So अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो dr by d थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करते हैं तो दिस विल बिकम 1 over p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास था 1 over r स्क्वायर और r की वैल्यू 1 over u है, सो 1 over r की वैल्यू इसका मतलब है u हो जाएगी, और 1 over r स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर और 1 over r4 की वैल्यू 1 over u पावर 4. सो वी कैन राइट दिस एज u स्क्वायर plus u power 4 and minus 1 over u square du by d theta squared, which can be then written as 1 over p square is equal to u square plus du by d theta squared. क्योंकि ये u स्क्वायर की पावर स्क्वायर इस u4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और दिस माइनस का स्क्वायर प्लस है हमारे पास, तो du by d थीटा का स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज 1 over p स्क्वायर. अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी कैन राइट एज 1 over p स्क्वायर d by d थीटा u स्क्वायर प्लस d by d theta into du by d theta squared. So this can be written as minus 2 over p cube and dp by d theta, and this will be written as du into du by d theta plus 2 du by d theta and then this d square u over d theta squared. सो अब हम इस 2 को कॉमन लेके बोथ साइड से डिवाइड कर सकते हैं. सो इट विल बी रिटन एज minus 1 over p cube dp by d theta is equal to u du by d theta plus du by d theta and d square u by d theta squared. Again we can write this as minus 1 over p cube dp by du and then du by d theta, और यहाँ से हम du by d theta कॉमन ले लेते हैं. we can write this as d square u over d theta squared. so ये du by d theta कैंसिल हो गया हमारे पास. we can write this as minus 1 over p cube dp over du is equal u plus d square u over d theta squared. So now we can write this as minus 1 over p cube dp over du. अब जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म थी, वो हमारे पास d स्क्वायर u over d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू f over h स्क्वायर u स्क्वायर थी. सो नाउ अब हमारे पास we can write this as dp by dr and then dr by du, which is equal to f over h square u square. So this can be written as minus 1 over p cube dp by dr or minus 1 over u squared. चूँकि हमारे पास r 1 over u है, so dr by du is minus 1 over u square. Then this is f of h square u square. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बोथ साइड से, u square is cancelled with this u square
और ये हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर अवर p cube. This minus multiplied by this minus become positive. So this dp over dr is equal to f. So this is the differential equation of the orbit in paddle form. Thank you very much.